हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में एक और ब्रांड न्यू आइल्स राइटिंग टास्क 2 हम कवर करने जा रहे हैं, जो 3 मार्च 2022 को इंडिया में पूछा गया है। हमारा जो टास्क स्टेटमेंट है वो ये है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट सो इट कैन बी फ्री फॉर पीपल हु यूज इट। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा ऐसे लिखना चाहते हैं तो आपको टास्क स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है। अगर आप टास्क स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हो then you can plan your essay well। तो इस पूरे essay को हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है, so you could have ideas, vocabulary and the way you can write an effective essay। हमने इसमें 7+ बैंड मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किया है ताकि आपकी प्रेपरेशन बेटर हो सके। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आई वुड लाइक टू से, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू इट नाउ because we have uploaded wonderful videos on our channel, so we could help you as more as we can। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे मॉडल आंसर है, some people argue that government is responsible to provide public transport freely so people could commute when they require। commute means travel। okay? जब आप किसी चीज पे डेली ट्रैवल करते हो उसको commute बोलते हो। I believe that the government and citizen must collectively fund mass transportation so it could be improved and dependence on personal conveyance decrease। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं क्या मानता हूँ, what I have written here, I believe that the government and citizen must collectively, सिटीजन्स को और गवर्नमेंट को कलेक्टिवली फंड मास ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का हमने यहाँ पे सिनोनिम यूज कर दिया है, मास ट्रांसपोर्टेशन, सो इट कुड बी इम्प्रूव्ड, इसको सुधारा जा सके। और जो पर्सनल कन्वेंस हैं, जो आपके पर्सनल व्हीकल्स हैं, वो सड़क पे डिक्रीज हो सके। ओके, नाउ लेट्स गो टू बॉडी पैराग्राफ 1। टू स्टार्ट विद, अब अपना ऐसे यहाँ से शुरू होता है, द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली accountable to provide better transportation because it is the life and bloodline of communication and mass transit। mass transit का मतलब दोस्तों क्या होता है, जब बड़े पैमाने पे लोग ट्रैवल करते हैं उसको मास ट्रांजिट कहते हैं। कम्युनिकेशन, इधर उधर जाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें ट्रैवल करने की जरूरत होती है। मैनी पीपल वुड ट्रैवल बाय मास ट्रांसपोर्ट्स, ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे मास ट्रांसपोर्ट के। if it is solely funded by government that may help reduce air pollution and control the traffic congestion on the road। इससे क्या होगा, जब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होएगा। एंड जो ट्रैफिक कंजेशन है, जब लोग पर्सनल व्हीकल लेके सड़क पर निकलते हैं तो रोड्स पे जो ट्रैफिक जैम है वो कम होंगे। इन मैनी कंट्रीज people ought to travel by buses and trains because they don't have to bear the fare and they are encouraged not to use their personal vehicles। बहुत से देशों में क्या होता है, उनको एनकरेज किया जाता है कि वो पर्सनल व्हीकल यूज ना करें क्योंकि बसेस और ट्रेन हैं जो उनके लिए फ्री हैं। तो आगे, many people tend to use their cars, personal cars and bikes when they have to pay for the public transportation। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पे करना होता है तब वो अपनी पर्सनल कार्स और बाइक्स लेकर निकलते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें हमने क्या रखा है, आई बिलीव दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुड बी शेयर्ड बाय सिटीजन। मैं ये मानता हूँ कि ये सिटीजन के द्वारा भी शेयर किया जाना चाहिए। एक्सपेंडिचर मीन्स जो खर्च उस पर होता है वो सिटीजन्स के द्वारा भी शेयर किया जाना, शुड बी शेयर्ड बाय सिटीजन, राइट। सो द गवर्नमेंट डोंट हैव टू इंक्रीज द टैक्सेस। अब देखो, ताकि गवर्नमेंट को टैक्स इंक्रीज ना करना पड़े, दिस कॉन्सेप्ट वुड एग्जिस्ट गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग मोर बसेस, ट्रेन्स, ट्रैम्स एंड मेट्रोज। ये जो आइडिया है गवर्नमेंट की मदद करेगा इन्वेस्ट करने में, किसमें, मैन्युफैक्चर करने में। दिस कॉन्सेप्ट वुड एग्जिस्ट गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग मोर बसेस, ट्रेन्स, ट्रैम्स एंड मेट्रोज एंड पीपल कुड हैव मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लोगों के पास बहुत से ट्रांसपोर्टेशन के साधन होंगे, मीन्स होंगे। द टोटल डिपेंड रिलायंस और गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज एंड अदर सिग्निफिकेंट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंड करेंगे इसके लिए तो ये उसको नेगेटिवली थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकता है। आगे मैंने क्या लिखा है, आई ऑल्सो थिंक दैट handicapped and old age people may choose not to pay by mass transportation। जो ओल्ड एज पीपल हैं और हैंडीकेप्ड हैं उनको छूट होनी चाहिए, वो चाहे तो पे कर सकते हैं, ना चाहे तो ना पे कर सके बाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, राइट। आगे कंक्लूजन में हमने क्या लिखा है,
To summarize, the government and people should bear the cost of public transport so it could be improved and people willingly choose to travel by buses and trains run by government. यहाँ पे क्या लिखा है? गवर्नमेंट्स और सिटीजन को विलिंगली पे करना चाहिए इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बसेज और ट्रेन जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है उनको यूज करें. दिस वुड हेल्प पीपल एंड गवर्नमेंट इन मैनी वेज. इससे सरकार और गवर्नमेंट इससे लोगों और सरकार को बहुत फायदा होगा. सो दिस इज आवर राइटिंग टास्क 2 दैट अपीयर्ड ऑन 3rd March 2022. So look at the task once again. Public transport should be funded by the government so it can be free for the people who use it. To what extent do you agree or disagree? Model answer. Some people argue that the government is responsible to provide public transport freely so people could commute when they require. I believe that the governments and citizens must collectively fund mass transportation so it could be improved and dependence on personal convenience decrease. To start with, the government is constitutionally accountable to provide better transportation because it is the life and bloodline of communication and mass transit. More people would travel by mass transports if it is solely funded by government, and that may help reduce air pollution and control the traffic congestion on the roads. In many countries, people opt to travel by buses and trains because they don't have to bear the fare and they are encouraged not to use their personal vehicles. Many people tend to use their personal cars and bikes when they have to pay for public transports. I believe that expenditure on the development of public transportation should be shared by citizens so the government don't have to increase the taxes. This concept would exist. Governments invest in manufacturing more buses, trains, trams, metros, and people could have many means of transportation. The total reliance on government may influence the speed of developments of roads and railways, other significant medium of transportation. I also think that handicapped and old age people may choose not to pay for commuting by mass transport. To summarize, the government and people should bear the cost of public transports so it could be improved and people willingly choose to travel by buses and trains run by government. This would help people and government in many ways. I hope that you have got the ideas, vocabulary, and the way how you could write your IELTS writing task to effectively to score more than 7 band. Friends, I would like to say one more thing before we go. Do not forget to subscribe our channel because we have already uploaded quality content on our YouTube channel to help you score high in your first attempt. Thank you so much. See you next time.